Assalamualaikum students, hope you are doing well. Today we are going to read Unit 4, first chapter, and that is determination. जिसका main theme है hope, courage and determination. Mean strong intention, strong wish to do something and to remain steadfast. साबित कदम रहना उसके लिए. This is the real story. Is anonymous means unknown. So आपके पास author के बारे में नहीं है, लेकिन ये दो engineers की कहानी है, the father and son, and about the determination of two engineers and their strong courage, how they completed and constructed Brooklyn Bridge. Before starting the chapter, let me tell you something about the Brooklyn Bridge. This bridge is in New York City, which is one of the oldest suspension bridge in the United States. So Brooklyn Bridge was the largest suspension bridge of that time. सबसे पुराना जो बना वो यही Brooklyn Bridge था. Completed in 1883 में ये complete हुआ. It connects the boroughs, means the large part of Manhattan and Brooklyn by spanning the East River. तो एक दरिया ईस्ट रिवर के ऊपर है ये ब्रिज. इंजीनियर का एक इंतहाई शानदार कारनामा माना जाता है, यानी इसको उस वक्त में तामीर करना इंतहाई हैरत अंगेज और अकल हैरान करने वाली बात थी. जो इंजीनियर था उसका नाम था जॉन रॉबलिंग. सो ही गॉट दिस आइडिया टू build a bridge with the name of Brooklyn Bridge. So let's start our chapter. In 1883, a creative engineer named John Roebling was inspired by an idea to build a spectacular bridge connecting New York with the Long Island. However, bridge building experts throughout the world thought that this was an impossible feat. Feat means achievement जो कि impossible हो, and told Roebling to forget the idea. It just couldn't be done. It was not practical. It had never been done before. क्योंकि पहले किसी ने नहीं किया था, तो इस तरह का काम करना जो है impossible था other engineers के सामने. Roebling couldn't ignore the vision of the bridge he had in his mind, but the idea Roebling got in his mind, it was very difficult for him to ignore that idea. वो अपने idea को बिल्कुल practical शक्ल में देखना चाहता था. He thought about it all the time and he knew deep in his heart that it could be done. वो जानता था कि ऐसा हो सकता है. He just had to share the dream with someone else. उसे कोई बाइतिमाद कोई companion चाहिए था जिसके साथ वो डिस्कस करे कि इस तरह का उसका मंसूबा है और इस तरह से वो ये काम करना चाहता है. After much discussion and persuasion, he managed to convince his son Washington, a budding engineer, budding means a young engineer, that the bridge in fact could be built. Working together for the first time, the father and son developed concept of how it could be accomplished and how the obstacles could be overcome. Obstacle means hurdles, रुकावटें जो हैं इस दौरान. So they both discussed to remove or to reduce the hurdles, the obstacles in their way. जो रुकावटें हैं उनको हम कैसे दूर करेंगे. With great excitement and inspiration and the headliness of the wild challenge, headliness means extreme excitement, before them they hired their crew and began to build their dream bridge. Crew means persons, group of person, यानी अमला उन्होंने जो है वो भी हायर कर लिया ताकि उनके साथ एक टीम वर्क में काम कर सके. The project started well, but when it was only a few months underway, a tragic accident on the site took the life of John Roebling. Washington was injured and left with a certain amount of brain damage, which resulted in him not being able to walk, talk or even move. अब जहाँ पे वो काम कर रहे थे वहाँ पे एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ जिसमें जॉन रॉबलिंग जो फादर था वो तो अपनी जान गंवा बैठा, और जो वाशिंगटन जो उसका बेटा इंजीनियर था उसको सीरियस चोटें आईं जिसकी वजह से उसका ब्रेन जो है वो डैमेज हो गया था. He was confined to bed. ना वो चल सकता था, ना वो वॉक कर सकता था, even मूव नहीं कर सकता था, बात नहीं कर सकता था. We told them so, crazy men and their crazy dreams. It's foolish to chase wild vision, mean strange idea. They were following strange idea. ऐसे बंदे के बारे में हम यही कह सकते हैं कि ये crazy हैं और इनके crazy dreams होते हैं. Everyone had a negative comment to make and felt that the project should be scrapped since the Roebling were the only one who knew how the bridge could be built.
In spite of his handicap, Washington was never discouraged and still had a burning desire to complete the bridge, and his mind was still as sharp as ever. So as sharp as ever mean this is the simile. तो पहले की तरह वॉशिंगटन का दिमाग था वो अभी भी काम कर रहा था. दो आइडिया जो जितना भी था ब्रिज के बारे में वो उसके जहन में था. तो अदर इंजीनियर दे वर थिंकिंग कि चूंकि आइडिया मेन उसके पास है, अब तो हम इस ब्रिज को तामीर ही नहीं कर सकते. तो एवरीबडी थॉट के ये जो आइडिया है, ये प्रोजेक्ट है, इसको स्क्रैप करना चाहिए, मीन डिस्कार्ड कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए. हैंडीकैप मीन डिसेबल था. वॉशिंगटन चूँकि डिसेबल हो चुका था लेकिन वो अभी भी इतना शार्प और ज़हीन था कि वो अपने जहन से काम ले सकता था. He tried to inspire and pass on his enthusiasm to some of his friends, but they were too daunted by the task. अब रॉबलिंग को किसी ऐसे फ्रेंड की ज़रूरत थी जो अपनी enthusiasm उसको पास करे और वो उसकी हेल्प करे ताकि ये ब्रिज तामीर हो सके. But the other engineers, they were also afraid. Daunted means they were afraid. As he lay on his bed in his hospital room with the sunlight streaming through the windows, a gentle breeze blew the flimsy white curtain apart. Flimsy means smooth, flexible, and he was able to see the sky and the tops of the trees outside for just moment. तो जब वो हॉस्पिटल में था, हवा चली और अपने बेड से बाहर उसे थोड़ा सा आसमान, सनलाइट वगैरह नजर आया और इससे उसकी उम्मीद की किरण और भी, इसका जो इंथुजियाज्म था वो और भी जाग उठा. It seemed that there was a message for him not to give up. मतलब उसी लम्हे उसे ऐसा लगा कि उसे इस आइडिया को छोड़ना नहीं चाहिए. To give up means to leave this idea. Suddenly an idea hit him. एक आइडिया उसके जहन में आया. All he could do was move one finger and he decided to make the best use of it. वो सिर्फ एक ही उंगली वो मूव कर सकता था और उसने सोचा कि इसी उंगली का वो जो है वो मदद लेगा. By moving his finger, he slowly developed a code of communication with his wife. इसी एक उंगली के साथ उसने कम्युनिकेशन का तरीका ढूंढ लिया अपनी वाइफ के साथ. वो अपना मैसेज अब कन्वे कर सकता था अपनी वाइफ को. His wife Emily Roebling very devotedly helped him. करता वो क्या था? He touched his wife's arm with that finger, indicating to her. Indicating means to show her that he wanted her to call the engineers again. Then he used the same method of tapping her arm to tell the engineers what to do. It seemed foolish, but the project was underway again. So with this idea, the project started back. मतलब उसका आइडिया काम कर गया. अब उसी एक फिंगर से वो मैसेज लिखता था अपनी वाइफ के आर्म पे और उसको से कहता था कि इंजीनियर्स को बुलाएं, और फिर इंजीनियर्स से जो कहना होता था वो भी वो अपने वाइफ के आर्म पे लिखकर उनको मैसेज कन्वे कर सकता था. सो ही एक्चुअली कन्वेड हिज वाइफ to tell the engineers what to do next. और इस तरह से वो अपना आइडिया अपने प्रोजेक्ट का वो उसे बताता था कि नेक्स्ट क्या करना है. ये बिल्कुल एक फूलिश पागलपन लगता था लेकिन प्रोजेक्ट बहरहाल जो है वो चल पड़ा दोबारा. For 13 years Washington tapped out his instruction with his finger on his wife's arm until the bridge was finally completed. 13 साल की मुसलसल मेहनत के बाद ब्रिज इसी तरीके से जो वो टैप करता था और लिखता था और कन्वे करता था अपना मैसेज, इस तरीके से कंप्लीट हो गया. Today, the spectacular Brooklyn Bridge stands in all its glory as a tribute to the triumph of one man's indomitable spirit and his determination not to be defeated by circumstances. तो हालात से जो है जी इन्होंने वाशिंगटन ने हार नहीं मानी. Spectacular means extraordinary. अजीम शान जो ये ब्रुकलिन ब्रिज है ये अपनी पूरे वकार के साथ आज खड़ा है और ऐसा लगता है कि ये एक ट्रिब्यूट खराज तहसीन पेश कर रहा है फॉर ट्रायम्फ मीन्स फॉर द विक्ट्री ऑफ वन मैन्स. इनडोमिनेटेबल मीन्स समथिंग विच इज इनकेपेबल टू ओवरकम, जिसको फतह ना किया जा सके, जिसको डिस्करेज ना किया जा सके, जिसको डोमिनेट ना किया जा सके. तो उस बंदे का वाशिंगटन का जो हौसला था वो भी शिकस्त खाने वाला नहीं था और इसीलिए उसने ब्रुकलिन ब्रिज को तामीर किया. Brooklyn Bridge was considered one of the largest bridge of the world at that time. और जैसे शाहजहां ने मुमताज बेगम के लिए अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पे ताजमहल बनाया, इसी तरह ब्रुकलिन ब्रिज जो है वो एमिली रॉबलिंग और वॉशिंगटन के लव का एक मॉन्यूमेंट माना जाता है.
क्योंकि एमिली रॉबलिन ने बहुत डिवोशन से अपने हस्बैंड का साथ दिया। ब्रुकलिन ब्रिज को 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी माना जाता है, जबकि ताजमहल जो है वो 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में शामिल है। It is also a tribute to the engineers and their teamwork. इसके अलावा ये ब्रुकलिन ब्रिज को देखकर हमें टीम वर्क का भी एहसास होता है कि how much the teamwork is important, and to their faith in a man who was considered mad by half the world. आधी दुनिया तो उस बंदे को पागल समझ रही थी कि वॉशिंगटन का जो ब्रिज है वो तामीर ही नहीं हो सकता। इट स्टैंड्स टू एज अ tangible monument to the love and devotion of his wife. इसके अलावा इस पुल से हमें और क्या क्या सबक मिल सकता है। एक जो सबक है वो ये भी है, tangible means real, you can see it, monument means यादगार जो memorable होता है, devotion means loyalty। तो उसकी वाइफ की जो लॉयल्टी है वो भी हमें इस ब्रिज में नज़र आती है, क्योंकि वो 13 लॉन्ग ईयर तक पेशेंटली बहुत सब्र के साथ डिकोड करना मीन्स टू कन्वे द मैसेज, अपने हस्बैंड के मैसेज को वो पूरे इंजीनियर्स तक पहुंचा रही थी कि क्या करना है उन्होंने। परहैप्स दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ नेवर से डाई एटीट्यूड, मीन नेवर टू गिव अप, हार ना मानने का और मौत को भी हरा देने का ये एग्जाम्पल है ये ब्रिज। दैट ओवरकम्स अ टेरिबल फिजिकल हैंडीकैप एंड अचीव्स एन इम्पॉसिबल गोल, जो कि एक इनकेपेबल बंदा जो था, जो कि टोटली हैंडीकैप हो चुका था, तो उसका एक इम्पॉसिबल अचीवमेंट थी वो उन्होंने अचीव की। तो इस ब्रिज को देख के हमें ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमें सिखाता है ये ब्रिज। होप स्टूडेंट्स यू एंजॉयड दिस चैप्टर, रिवाइज द पैसेजेस एंड गिव इट अ रीड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।